दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल माचो मजा। सो टुडे आज हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट फॉल एंड दिस इज Sutipa. And my name is Sutipa. Hello everybody. And this is my friend Macho Maza. Yeah, I'm his friend Macho Maza and he's Sutipa and he's very naughty boy and he like my videos. And he is what was your name, boy? Songdiba. Yeah, his name is Songdiba and he's very weird guy. Just joking, he is a very good boy. So let's see what happened next in Elephant Fall. Yes. So friends, now we are on our way to Elephant Fall, but we spot something here beautiful. So मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा वीडियो बना लेगा। जब यहाँ पे आ ही गया तो ये इतना सुंदर चीज़ को देखा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ क्या है अभी। So friends, जब मैं जा रहा था एलिफेंट फॉल में तो फिर मेरे को ये देखा, ये है हम लोग का जेट TS598 एयरक्राफ्ट, इंडिया का एयरक्राफ्ट। सो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इज इट, कितना ब्यूटीफुल है ये, वाव। ओ हो वाव, ये एंटीना कुछ काम होगा लगता है। और ये है मिसाइल ना क्या, और ये है पता नहीं मशीन गन जैसा है जेट का, उड्डी इतना बड़ा मिसाइल। दिस मिसाइल इज वेरी ह्यूज एंड वेरी बिग। वाओ, आई हैव नेवर सीन एन एयरक्राफ्ट इन माय लाइफ, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया है ये, वाह वाह। इसको पूरा चेन से बांध के रखा हुआ है। सुपर जेट, वाह वाह। लगता है यही से उसका क्या बोलता है, उसका फ्यूल आता होगा यहाँ से। बहुत बड़ा जेट है एंड आई लव दिस। Glad to see this, and I don't know that like we can come and we can take videos and all. I thought it was prohibited, but it is not. So guys, if you come to Elephant Fall, you can always come and check out this jet. Okay, bye jet. See you in next time. So friends, now we are going to Elephant Fall. So this is the gate. We have to give money. So friends, just now we came from the entrance and the entry fee was for one person, it was 100 rupees. I was shocked to hear that because it's been long I didn't came here. I think because of corona virus the price has risen. So अगर आप यहाँ पे आएगा तो फिर एक आदमी का 100 रुपया लेगा। और वही नहीं, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग भैया जंगल साइड में जा रहा था तो यहाँ पे हम लोग का रास्ता ख़त्म हो गया, हम लोग वापस जाता है। तो ये जगह जहाँ पे मैं अभी आया, ये पूरा पार्किंग लॉट से थोड़ा सा साइड में है। तो अभी हम लोग चलते हैं एलिफेंट फॉल का मेन अट्रैक्शन पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी भी वहाँ से आया और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकता है। पर हेड कितना है वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी पार्किंग लॉट में था और हम लोग ये गेट में होके जाएगा। सो जहाँ से हम लोग आया था वो जगह से था, तो इधर से हम लोग ऐसा करके घूम के आया। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फ्रेंडशिप विद नेचर, लेट्स सी व्हाट द नेचर हैज़ टू ऑफर। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत घना जंगल लगता है। अभी हम लोग को पहाड़ के ऊपर भी चलना पड़ेगा। ओह मैन, बहुत ऊंचा है लगता है।
जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है ये पेड़ में, ये जंगल में, ये एलिफेंट फॉल का जंगल में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फ्रेंडशिप विद नेचर वाला जंगल में घूम रहा है, अभी एलिफेंट फॉल में। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट दिस एलिफेंट फॉल फॉरेस्ट हैज टू ऑफर। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर पेड़ है जंगल में। रास्ता जाने का तो जगह ही नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा ट्रैकिंग कर सकता है अब यहाँ पे। एलिफेंट फॉल तो वो जगह में, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं पागल का जैसा, और मज़ा है। You know, when you do some stupid things in your life, it makes you happy. Oh, so we are in a dilemma now. Either we go this side or either we should go that side. So we are confused. So दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोग जंगल में फंसा हुआ है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा ये जंगल। रास्ता को भी देखिए बढ़िया है। अब मैं चलूँगा ये पेड़ में। हो गया, और नहीं चढ़ सकता हूँ, मैं उतर रहा हूँ। मज़ा लग गया। तो दोस्तों हम लोग को मिल गया रास्ता एलिफेंट फॉल के लिए। अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे, वो भी ये घना जंगल से होके हम लोग यहाँ पहुँचा। सो नाउ लेट्स गो टू द रियल elephant fall. I don't know why they give this name elephant fall. If you are curious about this, then you can just Google it. You might find in Wikipedia. Yeah. Okay, we will go from here. So दोस्तों देखिए, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो फिर पानी थोड़ा कमती है। And this is the bridge of elephant fall. And this is the actual fall. Wow, yeah, this is the elephant fall right here, and that is the source of the fall, waterfall. So go here and you can see the view. So this is that bridge divides the elephant fall and the another park is over there. As you can see, that is not elephant fall, that is different park, and I forgot the name of that park. So we are here. So we'll go down and I will show you that one now. So friends, this is Elephant Fall. If you search Elephant Fall, then you will see this fall and that stairs and all, the staircase, and this is the 360 view of Elephant Fall. So the park opposite to Elephant Fall is Matelang Amusement Park. Okay. Someday I'll show you that park also, but today I don't feel like going over there, so we won't go to that park. So friends, this is Elephant Fall. And I'm touching the Elephant Fall water. It's very cold. Okay, there are people who are taking pictures. Okay, this Elephant Fall has to offer only this much. So we continue our journey to the next site. So friends, that was the entrance, but we came from the jungle, so we didn't get through with that gate and we skipped this fall. So this is the first part of the Elephant Fall. So it is very far. Okay, this fall is beautiful. Yeah. So this is the source of Elephant Fall. From this stream only it will go to the fall. Woo! So it will go through that stone and it will reach Elephant Fall. So this was the Elephant Fall.
So friends, these are the shop that you will get in Elephant Fall. Gift shop and clothes shop and all. So friends, we are here and this place is unknown. I have never came here before. Wow, रास्ता तो बहुत मजा है. अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल में. Because Elephant Fall was not that exciting, so we found new road on our way. So we are just going in that direction. तो चलो दोस्तों, देखते हैं कहाँ पहुँचता है. ओके. वाह, ये तो बहुत ही अनोखा जगह है. And this place is amazing. Wow, as you can see, oh, that are all mountains. We are on the mountain too. Wow, this is the view from here. Okay, so we're gonna just stay here for a while, and after that we'll go back home. So friends, I'm going to end my video here. तो friends, आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो. अगर अच्छा लगा है तो thumbs up दीजिए. And if you are new in my channel, please subscribe to my channel Macho Maza. So see you in next video.